Hello, good evening, everybody. Good evening, everybody. Hello. I hope you guys can hear me properly, right? One second, huh? Great. If you can hear me properly, and yeah, I'm sharing my screen now, then I'll be launching teacher NPS poll. If you can hear me properly, and if my screen is visible to you, then click on yes option. Great. Thank you, Srusti. Good evening, Kiran. Good evening, Srusti. Yeah. Okay, if you can hear me properly and if my screen is visible to you, click on yes option. I have launched a technical poll. Please click on yes option if you can hear me properly and if my screen is visible. Okay, I'm assuming that I'm clearly audible and my screen is clearly visible to everyone. I'm ending the poll now. Then we are directly going to start the class. Okay, guys. So human health and disease, and probably this will be the last part of human health and disease. Okay. So in the previous session, we are done with HIV ads. Okay. Now in today's class, we'll be talking about the another major disease, that is your cancer. And after finishing the cancer part, then we'll directly go to the alcohol abuse, drugs abuse, and all those sections. Okay. So there we'll be talking about few more things, and then the chapter will be over. So I will try to finish this particular chapter today. Okay, revision of this particular chapter today. And in next class, I just want you people to let me know which particular chapter you want me to revise. I was supposed to go with the next chapter, that is your strategies of enhancement of food production. Okay, but if you want me to go with any other chapter, just let me know in the chat section. I'll do that one. Okay, but not those chapter which has been revised earlier. जो चैप्टर का रिवीजन हो गया ऑलरेडी, उस चैप्टर को और एक बार रिवाइज अभी नहीं कर सकते. we need to revise new topics which are not done yet. Okay, well, let us start with a question, and before that check these things, like what we are going to do. We are going to do cancer, then your drugs and alcohol abuse. Okay, एड्स हो गया है immunodeficiency disorder के अंदर. Now here is a question for you people that is related to HIV ads. HIV attacks on which of the following cells of immune system? So our immune system get affected by HIV, human immunovirus, because it is a immunovirus. It means it is going to attack our immune system. Okay, so which particular cell of our immune system affected by HIV virus? Option A, helper T cell. Option B, macrophages. Option C, neutrophils. Option D, both A and B. I'm launching poll now, and I'm assuming that you can answer to the question. Yeah. Well, I've launched poll now, and I'm assuming that you can answer to the question. Perfect, Jayasri. Hello, Jayasri. You are late only by like few minutes only. No problem. Hello, Karthik. Hello, Muhammad, Srusti, Kiran, Jayasri, everybody. Good evening, good evening, good evening. Welcome to the class. After the weekend, again we are meeting today. Okay, 60% people have chosen their answer. 30 seconds gone. Last 30 seconds remaining. Oh, I got a very diverse answer here. I don't know how many of you were attending my last class, because those who have attended my last class, they can easily answer to the question, and their answer must be correct, because in the last class only I explained you about this particular HIV virus. HIV virus के बारे में मैंने previous class में ही बताया था. Yes. Okay. Okay. I'll be ending the poll. Just one second.
I'm just checking for the people who are in YouTube, like if they have anything, they have answered anything in the chat section or what. Good evening, people from YouTube, YT, and if you have any doubt or anything, or if you want to answer to the question, I mean, like you need to answer to the question. So answer me in the chat box, YouTube people. Well, I'm ending the poll now. Very good, Mohammed. Very good, Jayasri, Mohammed Raja and Jayasri. Well, I have stopped and then I'll need to share the result. Probably you can see the result that you have chosen now. 20% people have chosen option A, 20% people have chosen option B, 40% people have chosen option C, and option D is chosen by again 20% people. Let me stop sharing. Then I'll come to the explanation. HIV, human immunovirus. It is going to attack the immune system of a human, right? And the immune system of human are mostly led by, or I mean, like the most important cells of immune system, which will be making the immune system more stronger, are mainly helper T cell. So these are the cell which is going to make the immune system more stronger. And if a virus is going to attack that particular cell, then ultimately the immunity will goes down. The immunity will go down, or I mean, like the immunity will reduce, because the HIV virus is attacking the particular cell which is responsible for I can say power of immune system or immunity, that is helper T cell. So सबसे पहले ये helper T cell को attack करेगा, and soon after that it will again attack on another special and important cell, that is your macrophages. So इन दोनों cells को ये attack कर लेगा. So mainly इन दोनों के ऊपर attack करता है, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इतना ज्यादा attack नहीं करता. न्यूट्रोफिल्स से इनके नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं. ओके, सो ए एंड बी में जो ऑप्शंस है, हेल्पर टी सेल एंड मैक्रोफेजेस, दोनों को ये अटैक करता है, दिस पर्टिकुलर एचआईवी वायरस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट आल्सो, यू नो, लाइक फ्रॉम हियर ओनली आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन. Which cell of the immunity is also called as HIV factory? HIV factory किसको कहा जाता है? अपने बॉडी का कौन सा सेल को HIV फैक्ट्री कहा जाता है? जस्ट लेट मी नो. Which cell of the immune system is also called as HIV factory? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. आंसर तो आसान है, मैंने बता दिया दोनों ऑप्शन का, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट और सेकंड का, ए एंड बी में जो दिया हुआ है. नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज व्हिच पर्टिकुलर सेल ऑफ द बॉडी or immune system is also called as HIV factory? No, Hare Srusti. Okay, that's correct. I understand. Very good, very good, very good, Srusti. HIV factory. Tell me, which particular cell of the body is also called as HIV factory? Yes, very good, Muhammad Raja, Jayasri, and again Muhammad Raja. Well, so that is the correct answer. This particular macrophages are attacked by the HIV virus, and in the macrophages they are going to reproduce, they are going to multiply, they are going to replicate their genetic material, and a vast number of the viral material will be produced inside the macrophages. It will go and incorporate the genetic material of virus, will release from the virus, and it will get incorporated with the host genome. And during the time of incorporation, a particular enzyme will help. We'll be talking about that enzyme in the next question. Okay, so HIV factory of the body, जहाँ पे HIV produce होता है अपने body के अंदर, उसी को कहा जाता है HIV factory. That is your macrophages. Remember this one, macrophages. So that is your macrophages. So this is very, very, very important. Remember this one, BVI. Okay, well, I hope this is clear to everybody, and I just want
If it is clear to everyone, then click on yes option so that I will moving to the next slide. So that I will be moving to the next slide. Hello, Kiran. Two Kirans are there. Kiran NK, two Kiran NK. Well, so it's clear to everybody. I am assuming that it is clear to everyone, and I'm moving to the next question. One more question is visible on your screen now, which is not an enzyme present in HIV. इनमें से कौन सा एंजाइम HIV वायरस के अंदर नहीं होता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज, ऑप्शन सी माल्टेज, ऑप्शन डी reverse transcriptase. Right? So check out for all the options, okay, and then try to choose the right one. I am relaunching the poll. Read the question properly and then try to answer to the question. Hello, Harsha. After a long duration, you are in the class, I guess. Okay. Well, good evening, everybody. Good evening. Well, so now 20 seconds gone and nobody has answered to the question so far. Try to answer to the question in the poll section. I have launched poll. Okay. Got it, Harsha. Great. So 50% people have chosen their answer so far. 40 seconds gone. Last 20 seconds remaining. I want rest of the people to answer to the question. Guys, do it fast. Last 20 seconds remaining. I want rest of the people to answer to the question. Okay. Last 10 seconds. Only 66% people have chosen their answer. I want remaining people to answer to the question. Harsha, you are from which particular school? Okay. I'm ending the poll now. Sharing the result with the people. The result is like nobody have chosen option A and B. Okay. Few of the people have chosen option C and few of the people have chosen option D. So C and D is chosen by 50% people respectively. Well, let me stop sharing, then I'll explain it. Okay, I got it. Haveri. So Haveri is closed now. Oh. Okay, fine then. Well, which is not an enzyme present in HIV. HIV में इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? Remember this one. HIV के लिए याद रखो RIP. जिसको HIV हो गया भाई उसको RIP है. Rest in peace. RIP. So 3 एंजाइम RIP. Rest in peace. Okay. R for reverse transcriptase. Okay. I for integrase, P for protease. So 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज. सो इंटीग्रेज ये है प्रेजेंट, प्रोटीएज प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है. एक एंजाइम बच गया यहाँ पे, वो हो गया अपना माल्टेज. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. नाउ next one, my question for everybody is like, what is the role of integrase? Protease, we know it is going to digest protein. Reverse transcriptase, we know like it is helpful in the reverse transcription process. It is helpful in reverse transcription process, and I think I don't have to explain what is reverse transcription, क्योंकि एक बार तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वेरी सिंपल. आरएनए से वापस डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो एट दैट टाइम एंजाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, माल्टेज तो अलग होता है, माल्टोज का डाइजेशन के लिए होता है, ये लाइक कार्बोहाइड्रेट माल्टोज का डाइजेशन के लिए होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रेज? नाउ आई वांट आंसर इन द चैट बॉक्स. एनीबॉडी जिन्होंने मेरा प्रीवियस क्लास अटेंड किया था, they can easily answer to the question. Just let me know. Okay, just let me know what is the role of integrase. What is the role of integrase? Integrase का role क्या? Okay, I got answer in the chat box. Catalyst. Okay, but what is the role of integrase in HIV virus? Important role. I mentioned it in the previous class also. Jayasri. Yes,
Mohammad Raja, you were in the class, right? So the role of this particular integrase enzyme is to integrate two genetic material. First one is your, when the virus enter into the body, I mentioned you in this class also, I mentioned you that, yeah, application may help karega, I understand, okay, but listen from the beginning once again. Virus will enter into the body, macrophage cells will be there. When virus enter into the body, into the macrophage cell, when it come in contact with the CD4 cell of the macrophages, okay, the GP120 of virus, GP120, you know, GP120 which is identical to CD4, इसके कांटेक्ट में आएगा और आने के बाद यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा. दैट जेनेटिक मटेरियल और वायरल जीनोम गेट, वायरल जीनोम जो होगा वो इनकॉर्पोरेट होगा, वायरल जीनोम गेट इनकॉर्पोरेटेड और गेट मिक्स्ड, इनकॉर्पोरेटेड और गेट मिक्स्ड with, get incorporated or get mixed with the host genome, with the host genome. होस्ट जीनोम के साथ ये जीनोम मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के लिए कौन हेल्प करेगा? हेल्प करेगा इंटीग्रेज एंजाइम. और दिस इंटीग्रेज एंजाइम इज देयर जो कि इसके लिए मदद करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर, यस एग्जैक्टली, वायरल डीएनए और ह्यूमन डीएनए जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा वायरल डीएनए है एंड व्हिच वन इज योर ह्यूमन डीएनए. You cannot differentiate between them, okay, and this particular role is performed by integrase enzyme. I hope this is clear to everybody. Now I am moving to the next slide. Now you can see the symptoms and consequences. Like asymptomatic phase होता है सबसे पहले, जो कि मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में भी, और इसी asymptomatic phase को विंडो फेज भी कहा जाता है, क्योंकि रिमेंबर दी अल्टरनेट नेम, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा. Because in this particular phase, symptoms are not generally seen, but the T lymphocytes number will be gradually decreasing. धीरे धीरे T lymphocyte decrease करने लगेगा, and it is the phase which comes in between 2 to 12 weeks. इसके बीच में एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन नहीं होगा. I need not to explain all those things once again because वो तो कर दिया था हम लोगों ने. Okay, so that is your first stage of the HIV. First stage of HIV is also called as window phase. Okay, next will be AIDS related complexes ARC, and the third one will be your full blown AIDS where opportunistic infection will be happening. ये बताया था मैंने previous class में, and I hope I need not to explain you this one once again. तो HIV जब भी किसी person को होगा, so HIV virus will be entering into the host body, but host would not have any idea about the entry of the HIV up to almost like minimum 2 years तक उसको पता ही नहीं चलेगा. minimum 2 years उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है उसके साथ. और the HIV virus has entered into the body or anything, no idea or nothing will be there. कोई भी idea कुछ भी नहीं होगा उसको. ठीक है? Is that clear to everyone? Right? Okay, and later on gradually the symptoms will appear, but that symptoms is come, if the symptoms are shown, is like swollen lymph nodes, fever, repeated episodes of diarrhea, weight loss, almost 10% of the weight loss हो जाएगा, prolonged cough, so cough and sneezing will be continuously having. Okay, so these particular symptoms are shown and a person will be affected by the diseases, different kind of diseases. The T lymphocytes number will get decreased from 9 million to 2 million हो जाएगा इसका जो भी होगा 1 liter blood के अंदर. When, and this is your ARC, AIDS related complexities or complex. Now this leads to the third stage, that is your full blown AIDS, where what happens, the immunity will completely get down. Where? Because the T lymphocytes number are decreasing gradually. जो T lymphocyte number है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, and because of that now what is happening, the opportunistic infections are happening. Opportunistic infection होगा उसके वजह से.
ठीक है, opportunistic infection means as the immunity is getting lower, now what will happen, other pathogens can easily enter into the body, they can easily infect the body because our immune system is not that much powerful now. Our immune system is now not that much powerful. That is your full blown ads. Okay, I'm going to the next slide now. ये तो हो गया था ना. चलो यहाँ पे एक सवाल है, आसान सा सवाल है. विंडो फेज इज ऑल्सो नोन एज, अभी अभी हमने देखा. ऑप्शन ए एसिम्प्टोमेटिक फेज, ऑप्शन बी आर्क फेज, ऑप्शन सी फुल ब्लोन एड्स फेज, एंड ऑप्शन डी none of the above. Okay, well, I'm launching the poll for this particular question and I hope you can answer to the question. Great, perfect. मोहम्मद राजा सृष्टि एकदम सही, मोहम्मद राजा एंड सृष्टि एकदम सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Okay, we are waiting for other people to answer to the question now. Okay, 30 seconds gone, and yeah, from the Zoom, everyone has answered already. I want other people to answer. I mean, like the people who are in YouTube, answer me in the chat section. Chat section में answer करो. एक बार देख लेते हैं YouTube में बच्चे क्या बोल रहे हैं. Okay, so people who are in YT, live in YT, please answer me in the chat section. Well, I'm ending the poll now. Sharing the result with you people. Result is like option A is chosen by everyone, B, C, and D is not chosen by anyone. So it's very clear and very fine that he is asymptomatic phase. Arc नहीं, full blown phase नहीं. इसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा. Right? So none of the above तो हो नहीं सकता. Well, so I am moving to the next slide, and ये बताया था diagnosis test क्या होता है. Remember, two tests can be conducted. First one is your screening test and second one is your confirmatory test. First test is your ELISA test, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे ये बनाया जाता है. ओके, ये जो होता है ना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे डिजीज को डिटेक्ट किया जाता है, एंड ये कभी भी विंडो स्टेज में नहीं परफॉर्म किया जाता. वी कैन नॉट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर स्क्रीनिंग टेस्ट. ये स्क्रीनिंग टेस्ट को हम लोग विंडो फेज में नहीं कर सकते. वी कैन नॉट परफॉर्म दिस इन विंडो फेज. विंडो फेज में नहीं कर सकते. व्हाई वी कैन नॉट डू इट इन विंडो फेज? बिकॉज ड्यूरिंग विंडो फेज एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड. विंडो फेज में एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, इसी की वजह से. I hope this is clear to everybody. Next one is your confirmatory test. इसमें important है confirmatory test में, that is your Western blotting. Western blotting ज़्यादा important है. Remember this one. Western blotting is a technique which is used to detect the HIV, and it is the confirmatory test. Okay, remember about the screening test, that is your ELISA. It work on antigen antibody complex. These things, whatever I have marked here, this can be asked as a question. जो भी मैंने मार्क किया वो सब एक क्वेश्चन बन सकता है. Now let us talk about the treatment. We can treat this particular disease by providing, or simply this disease cannot be treated properly. I mean completely, right? Because HIV is a viral disease and viruses don't have any particular shape, and as they don't have any shape, any size, we cannot develop any medicine to fight against them. Okay, so that is why this disease cannot be treated, but we can prolong the life of infected person. जो infected person होगा उसका life को हम लोग increase करा सकते हैं. We can prolong the life of infected person. How can we prolong the life of infected person? By providing or by slowing down the reproduction process of HIV virus. By slowing down the reproduction process of HIV virus. First one कैसे slow करेंगे? They need reverse transcription enzyme for the production of the
genetic material. So we can simply provide reverse transcriptase inhibitor. Reverse transcriptase inhibitor, that is your judovudine, stevudine, judovudine, stevudine, okay, stevudine and judovudine, ये दो दे करके हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं. ओके, देन वी कैन आल्सो अप्लाई प्रोटीएज एंजाइम सो दैट प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा. अगर प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं हुआ तो भी प्रोसेस बंद हो सकता है, आई मीन रेस्ट्रिक्ट हो सकता है. सो प्रोटीएज एंजाइम वी कैन अप्लाई, और प्रोटीएज inhibitor can be used as a medicine, that is ritonavir, nelfinavir, sequinavir, ये सब का यूज किया जाता है. Okay, and finally the most developed one, that is your heart. Heart is your highly activated antiretroviral therapy. Antiretroviral therapy means here both protease and like include both inhibitor for reverse transcriptase and protease enzyme. दोनों के लिए इसके पास inhibitor होता है, दोनों के लिए, both for inhibitor, both for reverse transcriptase enzyme and protease enzyme, right? Heart highly activated antiretroviral therapy. Remember this one. Okay, this is highly activated antiretroviral therapy. Okay, heart. I'm moving to the next slide. Well, here is a question once again. Question is like, AIDS test is also known as, okay, whether it is ELISA or HIV test or Australian antigen or none of these. It's very simple, and I don't think I need to launch any poll to answer to the question. I don't think you people also need any poll to answer to the question. Anyway, I have launched poll, and let us see how many of you are answering in the poll. Perfect. Srusti, Mohammad Raja. Very good, very good. Srusti and Mohammad Raja. 33% people have already chosen in the chat section. Everyone has answered in the chat section. 66% people have chosen in the poll, and 30 seconds gone, last 30 seconds remaining. I want the rest of the people to answer to the question. Guys. Okay, I'm ending the poll now. Sharing the result with the people. Result is like everyone have chosen option A, B, C, and D is not chosen by anyone, and that's the correct one. Like ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, which is a screening test. It is not the confirmatory test. Okay. Okay. Got it, Mohammed. I got it. STD का प्रिवेंशन के लिए I don't think यहाँ पे ज्यादा हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा. देख लो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं. We need to educate ourselves against the HIV. Okay, so ये सारा पॉइंट्स है, ये बहुत ज्यादा मतलब ये करने वाला चीजें नहीं है, इसीलिए इसको हटा दो. देखो आसान सा चीजें है, मैंने पॉइंट्स को पढ़ देना है बस, ठीक है. एजुकेट बना दो, सबको एजुकेटेड कर दो, सो दैट दे विल बी नोइंग अबाउट द HIV डिजीज. एड्स के बारे में किसी को पता चला कि ये कैसे, हाउ इट इज स्प्रेडिंग, ओके, एंड हाउ ऑल दिस लाइक हाउ HIV इज स्प्रेडिंग, हाउ इट इज हैपनिंग एंड हाउ कैन वी ट्रीट HIV, ये सब किए तो फिर प्रिवेंट लाइक कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है. स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ईच ट्रांसफ्यूजन. ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन मतलब उसका स्क्रीनिंग करवाओ. I mean, check for the donor whether the donor is having HIV or not. उसको देखो पहले, उसके बाद करो, ठीक है. Use of disposal syringe. I mean, the disposal syringe should not be used again and again. Okay, if it is used by a patient and again we are using that, I mean, like in that case, then you will also get affected. First one. Okay, sterilize bloods by dental equipment during surgery. Okay, ban of prostitutions. Okay, use of new blades in the barber shops. These are certain steps you can be
लेकिन इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कैंसर. Now we'll be talking about the second disease, that is your cancer. ठीक है, ऑन्कोलॉजी, क्रैब और इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, 1 सेकेंड. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डिजीज, कैंसर के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको. कैंसर मीन्स क्रैब. कैंसर मीन्स crab. Remember this one, cancer mean crab. Okay, why this cancer happens? Cancer happens because of uncontrolled division of the cell. कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, उनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, एंड दिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीड्स टू कैंसर. This uncontrolled cell division leads to cancer. Is that clear to everybody? यहाँ से फिर कैंसर हो जाता है. ठीक है, this leads to formation of tumor, and tumor leads to the cancer situation. This leads to formation of tumor, and this, well, right, and the study about cancer is called as your oncology. Oncology is nothing but study about cancer. Study about cancer is called as oncology. Cell loses the property of contact inhibition. This is really important. They lose the property of contact inhibition. What happened in general during the time of cell division? You must have idea about this one. Cell division के time पे the cell division get restricted because of a mechanism, and that mechanism is called as your contact inhibition mechanism. Suppose this is an area. I think I mean to say this is an area. Here one cell is there. After a successful division, it will be forming here one cell, here one cell. Okay, next division, third division में क्या हो जाएगा? Third division में again I am making it like this only. ये एरिया है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे एक सेल. So after first division, this will be producing 2 cells. After second division, 4 cells will be produced. When 4 cells are produced, all the membrane of these cells are in contact with one another. Membrane of cell are in contact with one another. एक दूसरे के कांटेक्ट में है. membrane of the cell कांटेक्ट में है, and when the membrane of the cell are in contact of with one another, at that time what is happening, जब ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, this leads to creation of a stimuli. एक स्टिमुली क्रिएट होता है यहाँ पे. जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, स्टिमुली विल बी क्रिएटेड, एंड दैट स्टिमुली विल बी सेइंग दैट, इन सारे सेल्स को बोलेगा कि तुम मेरे कांटेक्ट में आए. दिस पर्टिकुलर सेल विल प्रोवाइड सम स्टिमुली टू दिस सेल, as well as this cell is going to provide some stimuli to this cell. This particular thing is happening. Adjacent cells में ये सब होगा. एक दूसरे के कांटेक्ट में जो आएगा, stimuli provide करते जाएंगे. What kind of stimuli it is? The stimuli is like you have grown. The stimuli will be, the language of the stimuli is, the statement of the stimuli is, you have grown up to your limit. Now it's time to restrict yourself. You cannot grow now. You cannot divide now. Right? When they come in contact with one another, the adjacent cell or the nearby cell which come in contact with another cell will inhibit its growth. क्या करेगा? इसका growth को वो inhibit करेगा. Is that clear to everybody? Right? And that is called as your contact inhibition. Cell loses the property of contact, and that is called as like a contact inhibition. And when it loses the property of contact inhibition, even though the cells come in contact with one another, no inhibitory stimuli will be formed. ठीक है, even though ये अगर हो गया ना, ये चीज हो गया, अगर contact inhibition वाला property अगर lose हो गया, तो this leads to no effect even after surface contact. Even after surface contact. Even after surface contact, ये अपना जो डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगेगा. राइट? एंड व्हेन इट डिवाइड in a uncontrolled manner, this leads to formation of the cancerous cells, tumor, or is called as your cancer. ठीक है? This growth of cancerous cell form the structure called tumor.
समझ आया ना? अभी ये कैंसरस सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करके बल्ज आउट हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे ये बल्ज आउट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाएगा तुम्हारा ट्यूमर और न्यूप्लाज्म. रिमेंबर दिस वन, दिस इज ट्यूमर और न्यूप्लाज्म, राइट? I am moving to the next slide now, if it is clear to everybody. And why this happens? ये क्यों होता है? ये इसके लिए भी एक चीज है. Because see, our body will be having certain genes जो कि माइटोटिक डिवीजन को प्रोमोट करता है, जिसको कहा जाता है माइटोजेंस. You know, like there are certain things which are called as mitogens. Mitogens are the material which promote mitosis division, which promote or initiate mitosis, promote mitosis division or initiate mitosis, which promote mitosis or initiate mitosis division. Is that clear to everybody? ये promote करेगा mitosis division को, ठीक है? That mutagens, sorry, mitogens, not mutagens, mitogens will activate certain genes in the cell, in the cell or in the body, that are called as your oncogenes, and activation of these oncogenes leads to uncontrolled cell division. Activation of this oncogene leads to uncontrolled cell division. Is that clear to everybody? Right? आया समझ में? और यही uncontrolled cell division leads to a situation where there is a production of a mass of cell can be seen, and that is called as your tumor or neoplasm cell. I hope this is clear to everyone. I am going to the next slide now. These are different types of tumor we can see here. These are different types of tumor we can see here. देखो different तरीके के tumors यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा. What are the different types of tumors? First one is your benign, and second one is your malignant. Benign tumor is localized in a site and it is non-dangerous, we can say. Non-dangerous, इतना ज्यादा dangerous नहीं होता है. It is located or restricted in a site itself. Whereas if you are talking about the malignant tumor, this is transferable or movable locomotory, we can say. This is most dangerous. ये बहुत ज्यादा dangerous होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर सकता है. Okay, so benign tumor are, as I told you, benign tumors are, they are localized to the site of origin. They are localized to the site of origin. उसी साइट में ही उन लोग रहेंगे, ठीक है? They are non-invasive, non-metastatic, and non-cancerous. It is saying that they are non-invasive. Invasive in the sense they are not going to invade other cells. They are not going to infect new cells. Non-invasive. They are non-invasive. And non-invasive का मतलब होता है they are not going to invade other cell. Invade new area. They are not going to invade new area. Right? Okay. And this causes very little damage. They are non-metastatic. Non-metastatic. So see this one, non-metastasis. Non-metastasis in the sense metastasis का मतलब होता है starvation of the nearest cell. Metastasis का मतलब होता है starvation of nearest cell. I mean to say, like, suppose these are two cells. I can say this is one cell, this is one cell, this is another cell, this is another cell, this is another cell. Well, so this particular cell which is in the center, I'm making it in red color now. This particular cell, suppose this is the cancerous cell. Consider this one, this is the cancerous cell. So this cancerous cell have the quality or capability to divide continuously, and when it divides continuously, it must need some energy or some food material energy or anything. Okay, without energy it cannot divide. So what it will do, it will consume all the energy that is present around itself. इसके चारों तरफ जितना एनर्जी होगा, सारा एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा, ठीक है? It is going to, one second, sorry guys. Okay, so what it is going to do, this cancerous cell is going to divide continuously. It is going to divide
कंटिन्यूअसली, और जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा दिस लीड्स टू, जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा दिस लीड्स टू स्टारवेशन ऑफ अदर सेल। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, इट नीड एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए। एंड व्हेन इट नीड एनर्जी, समझ आया सबको? इट नीड एनर्जी, एंड व्हेन इट नीड एनर्जी इट इज गोइंग टू टेक अप ऑल द एनर्जी प्रेजेंट अराउंड इटसेल्फ, एंड at that time when it will take energy that is present everywhere, the nearest cell, this cell, this cell, this cell, all these cells will get starved. Okay, and that is called as your metastatic। उसी चीज को कहा जाता है क्या? उसी चीज को कहा जाता है अपना मेटास्टेसिस, उसी चीज को कहा जाता है मेटास्टेसिस। बट ये वाले जो बेनिग्न ट्यूमर होते हैं दे आर नॉन मेटास्टेसिस, आई मीन दिस पर्टिकुलर स्टारवेशन इज नॉट हैपनिंग इन बेनिग्न ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर में ये स्टारवेशन नहीं होता है, ये इन्वेजन नहीं होता है बेनिग्न ट्यूमर में। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर यू कैन सी दैट वन। ओके, वेल सो it is restricted to the site only, I mean bone tumor, osteoma, muscle tumor, myoma, lymph node tumor, that is lymphoma. Okay, osteoma, myoma and lymphoma, these are different examples we can check in, right? So this is all about your types of tumor. If it is clear to you, then click on yes option so that I will move to the malignant type of tumor. Great, malignant tumor में चल रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना जल्दी से। This is all about your malignant tumor. Okay, malignant tumor के बारे में बात करें। malignant मतलब harmful, नाम से पता चल रहा है malignant मतलब harmful। tumor cell invade and damage the surrounding cells also। surrounding cells को भी ये क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं, invade करते हैं। बताया था मैंने, they starve the normal cells which are called as your metastasis, which is called as your metastasis। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नो रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आई मीन इट कैन माइग्रेट, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ट्यूमर सेल्स मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड स्टार्ट a new tumor there, starving healthy tissues. Okay, so this is versus benign and malignant, you can see in the picture also। पिक्चर में भी देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि benign and malignant में क्या फर्क है। one second ना, you can see here benign cells are there, they are not moving anywhere, ये move नहीं कर रहे, कहीं पे भी move नहीं कर रहे। okay, but here you can see these malignant tumor cells, they are traveling out of the area wherever they were living, जहां पे ये प्रोड्यूस है वहां से दूसरे तरफ माइग्रेट भी करते हैं। दिस इज malignant, so malignant is more dangerous, right? I'm moving to the next slide, just let me know if you have any kind of doubt। okay, now here is a question for you people। question is like, study of cancer is also known as option A oncogeny, option B oncology, and option C ornithology, option D cancerology। ठीक है, so I'm launching poll for this particular question and I hope you can answer the question। awesome, perfect, very good Jayashree, very good Mohammad, very good Srusti, great। chalo, so everyone have chosen in the poll section also and they have answered in the chat section also। we are waiting for the YouTube people to answer to the question now, guys, do it fast। 30 seconds gone, last 30 seconds remaining। okay, I'm ending the poll now, then I'll be sharing the result with you people। the result is like you can see here, result is everyone have chosen option B, A, C and D is not chosen by anyone। let me stop sharing and it's very simple, oncology,
onco means cancerous and logi means study. Okay, ornithology study about I can say feathers, okay, or study about birds we can say. Okay, then cancerology ये तो कुछ होता नहीं है, हटा दो इसको. आई एम मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे नाउ. वो टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन व्हाट था, बेस्ड ऑन आई कैन से इन्फेक्शन के हिसाब से. ठीक है, एक जगह पे रहता है या दूसरी जगह पे जाता है. नाउ बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ पे होता है ये, बेस्ड ऑन ओरिजिन इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरीके के होते हैं. हियर यू कैन सी, ये लिखा भी हुआ है लेकिन इसको इरेज करके खुद से बना लेंगे और एक बार, सो दैट इट कैन बी more useful for you. Types of cancer on the basis of origin: carcinoma, sarcoma and leukemia. This is epidermal in origin when the cancer happens to the epidermal tissue. Epidermal tissue में जब कैंसर होगा, okay, carcinoma. Sarcoma when the cancer happens in the mesodermal tissue, and leukemia happens in the endodermal tissue. Okay, epidermal, mesodermal and endodermal tissue. Sorry guys. Okay, so epidermis, endodermis and mesodermis, I know, I mean like you know, outermost layer epidermis होता है, उससे अंदर वाला होता है mesodermal and अंदर वाला पूरा होता है एंडोडर्मल. एपिडर्मिस, मेसोडर्मल एंड द लास्ट वन दैट इज योर एंडोडर्मल. ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ओके, सो दिस इज योर कार्सिनोमा. दिस इज योर कार्सिनोमा. सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू में. ये देखो किस तरीके का हो रहा है, मतलब किस तरीके का कैंसरस है, कैंसर हुआ है कार्सिनोमा सिचुएशन पे. कार्सिनोमा की अगर बात की जाए, सो इन द कार्सिनोमा देखो स्किन एपिडर्मल लेयर पे, ये एपिडर्मल लेयर पे, ये एपिडर्मल रीजन पे हुआ है. ओके, एपिडर्मल ओरिजिन पे हुआ है. एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर दैट हैपेंस. ऑलमोस्ट 85% ऑफ द कैंसर आर कार्सिनोमा टाइप. कैंसर ऑन द एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑन द एपिथेलियल टिश्यू. एग्जांपल, ब्रेन में, कोलन में, गैस्ट्रिक, सर्विकल, ब्रेस्ट, लंग्स, ओरल, एडेनो और ग्लैंड ट्यूमर. ये सारे के सारे याद रखो, ब्रेन, कोलन, गैस्ट्रिक, सर्विकल, ब्रेस्ट, लंग्स, ओरल, एडेनो, दिस इज ग्लैंड ट्यूमर. सो इनमें अगर हुआ तो वो कार्सिनोमा टाइप है. मेलानोमा, कैंसरस ग्रोथ ऑफ द मेलानोसाइट्स. मेलानोमा इज अनदर एंड मेलानोमा इज मोस्ट इंपोर्टेंट. मेलानोमा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना. मेलानोमा मीन्स इट इज नॉट मायोनोमा. ठीक है, ये मायोनोमा नहीं है, ये मेलानोमा है. Melanoma means when the cancer happens due to the melanin pigments, or when the cancer happens in the melanocytes. Melanocytes, you know, melanocytes are the cells which are present on the skin. Melanocytes are the cell which are present on the skin. Skin में present है ये cells, और ये जो cells है, ठीक है, इनमें होता है एक पिगमेंट. इनमें होता है एक पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम है मेलानोसाइट्स पिगमेंट और मेलानिन पिगमेंट्स. मेलानोसाइट्स के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलानिन, एंड दिस मेलानिन पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कलर. आई नो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस वन. इसी की वजह से बॉडी कलर जो होता है ना, पता चलता है. कोई कोई डार्क बॉडी कलर वाले होते हैं, कोई कोई व्हाइट बॉडी कलर वाले होते हैं, अलग अलग होता है. ओके, सो adeno means that is only given in the bracket. Adeno means gland tumor, glandular tumor. Gland में अगर tumor हुआ तो that is adeno tumor. ठीक है, it is given in the bracket itself. Bracket में mention किया गया इसीलिए. Now sarcoma, next is your sarcoma. When the cancer happens in the particular मेसोडर्मल टिश्यू. जब कैंसर होगा किस टिश्यू में, मेसोडर्मल टिश्यू में, उसको सार्कोमा कहा गया. बोन कैंसर, मसल कैंसर, लिम्फ कैंसर. बोन के लिए ऑस्टियोसार्कोमा, मसल के लिए मायोसार्कोमा, लिम्फ के लिए लिम्फोसार्कोमा. ओके, दैट्स इट. एंड लास्ट वन इज योर ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज द इनर वन, एंडोडर्मल लेयर.
और ये ल्यूकेमिया का मतलब होता है, ल्यूकेमिया का मतलब होता है व्हेन दी कैंसर हैपेंस इन द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में जब कैंसर होता है, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी में जब कैंसर होता है, ल्यूकेमिया उसको कहा जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है इसको। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं एज इट इज ए यू नो रिवीजन क्लास, तो थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। वैसे वेस्ट हो गया 30 मिनट्स मोहम्मद जी। Okay, well now particular question is here, read the question properly. Muscle cancer becomes, or muscle cancer comes under which category? Muscle cancer comes under which category, whether it is sarcoma, carcinoma, sarcoma, leukemia, or mystecoma. Well, I'm launching poll now for this particular question and I hope you can answer to the question. परफेक्ट जयश्री, परफेक्ट मोहम्मद, परफेक्ट श्रुति, एकदम सही श्रुति, जयश्री एंड मोहम्मद। कार्सिनोमा कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया, एंड लास्ट वन इज योर माइस्टेकोमा, राइट? व्हिच वन विल बी द मसल कैंसर? मसल कैंसर किसके अंदर आएगा? Okay, 30 seconds gone, last 30 seconds remaining. 30 सेकंड गया, 40 सेकंड गया, last 20 seconds remaining now. Okay, I'm ending the poll here, sharing the result with you people. Result is like nobody have chosen option A, C and D. Option B is chosen by everyone. Let me stop sharing, then I'll come to the point. Okay, so let me explain you this particular question now. One second. Okay, so let me explain you this one. So now if you are talking about carcinoma, carcinoma is your epidermal one. Epidermal में epithelial tissue आता है, epidermal में epithelial tissue आता है. So epithelial tissue के अंदर ये नहीं आएगा, तो ये नहीं है. Sarcoma में mesodermal tissue आता है. Mesodermal is responsible for muscle production. इंटरनल ऑर्गन के लिए एंडोडर्मल आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है. ल्यूकेमिया इज योर ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर. माइस्टोकोमा ऐसा कुछ नहीं होता है. माइस्टोकोमा ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि माइस्टे रिलेटेड टू मसल, माइस्टे जो टर्म होता है इट इज रिलेटेड टू मसल, इसी के वजह से दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए. माइस्टेकोमा कुछ नहीं होता है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, राइट? माइस्थेनिया ग्रेविस याद है? माइस्थेनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है. एसिटाइल कोलाइन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा था वहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था. नाउ हाउ कैंसर सेल हार्म मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है. सो ट्यूमर सेल विल नॉट फॉलो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिंसिपल, जो कि मैंने वहां पे भी बताया था. इट इज नॉट गोइंग टू फॉलो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिंसिपल. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है बताया था मैंने, कि ऐसा एक कोई भी ऑर्गन का पार्ट कुछ भी ले लो, एक सेल है, डिवाइड हुआ, 2 सेल बनाया, फिर डिवाइड हुआ, 4 सेल बनाया, अभी भी स्पेस है तो फिर से ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके अभी देखो सारे सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए, 8 सेल बना दी. सपोज कंसीडर कि ऐसा हो गया, और ये जगह जो है ये फील्ड हो गया अभी. तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आने के बाद दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड वंस अगेन, बिकॉज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर
they start secreting or producing certain stimuli saying that there is no space now and we cannot grow the population. यही चीज है, मतलब सपोज इन ए कम्युनिटी पीपल आर स्टेइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, कॉलोनी में लोग रहते हैं, एंड इन दैट कॉलोनी द स्पेस इज वेरी मच लाइक शॉर्टेज, स्पेस का शॉर्टेज हो रहा है. सो पीपल दे विल बी डिसाइडिंग टुगेदर कि अभी तो जगह नहीं हो रहा है. सो नाउ देयर इज नो वे टू reproduce, there is no way to keep other people in this particular colony, there is no way to bring other people into the colony. So that is what contact inhibition principle. Okay, tumor suppressor gene stops working for them. Okay, so tumor suppression gene जो होता है उनके अगेंस्ट काम करना बंद कर देता है, जो कि मैंने बताया था which particular gene, that is your oncogene. You remember oncogene, उसके बारे में बताया था. ओके, कॉजेस ऑफ कैंसर. सो कैंसर कैन बी कॉजेस ड्यू टू मल्टीपल थिंग्स, और लाइक मल्टीपल वे से कैंसर हो सकता है. मल्टीपल वे जिसके वजह से भी कैंसर होगा उस चीज को कैर्सिनोजेन कहा जाता है. कार्सिनोजेन कहा जाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है. इट कैन बी ए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट व्हिच कॉजेस कैंसर are carcinogens. Okay, they convert the normal cells into the cancerous cells. Physical carcinogens are, you can read out the things, ionizing ray, non-ionizing ray. Okay, ionizing ray के अंदर अपना X-ray, gamma ray आएगा, and non-ionizing ray के अंदर UV rays which causes skin cancer. UV rays which causes skin cancer. This UV ray penetrate into the surrounding through the ozone layer and it causes skin cancer. Sunlight में होता है UV ray. Okay, chemical carcinogen में tobacco आएगा, tobacco, nicotine, alcohol, these are all. Okay, biological carcinogen के अंदर one second ना, biological carcinogen के अंदर viral content, viral genome, that is your oncogene के बारे में जो कि मैंने बताया था. ठीक है, so these are the carcinogens or I can say agents which can cause disease, cancer disease. So the pathogens which can cause cancer disease is called as your carcinogen. ये फिजिकल कार्सिनोजन हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं. फिजिकल में आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रे हो सकते हैं. आयोनाइजिंग में एक्स-रे, गामा रे आएगा एंड नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज आएगा. केमिकल्स में टोबैको, निकोटीन एंड नेक्स्ट इज योर अल्कोहल. वायरसेस के अंदर आएंगे biological carcinogens. Okay, so diagnosis can be done using this biopsy, radiography, CT scan, MRI scan. You must be aware about this particular term. CT scan क्या होता है, देखा जाता है मतलब मशीन के अंदर. MRI scan क्या होता है, 3D इमेज, ये भी पता होगा. CT scan में ऑलमोस्ट लाइक 2D इमेज आता है. रेडियोग्राफी में भी 2D इमेज आएगा. एक्सरे रेडियोग्राफी जिसको कहा जाता है, इट इज एक्सरे. इसमें 2D इमेज आएगा कोई भी ऑर्गन का. सिटी स्कैन में भी ऑलमोस्ट लाइक 2D इमेज आएगा. ओके, MRI स्कैन में 3D इमेज आएगा. पूरा डिटेल पता चलेगा तुमको. 3D इमेज, 3 dimensional image. Biopsy is something different kind of thing. Biopsy is the way to grow the cancerous cell. किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, पर्टिकुलर पार्ट को कट करके लिया जाएगा. कैंसर जो सेल के ऊपर मतलब ट्यूमर को कट करके लिया जाएगा. बायोप्सी इज ए डिफरेंट मेथड, यू नो. यहाँ पे जो ट्यूमर होगा, ट्यूमर सेल को कट किया जाएगा और उसको लेकर के पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू दी सेल पीस विच हैव बीन रिमूव्ड नाउ. जो सेल को रिमूव किया गया, काट के लिया गया है छोटा सा पीस को, ट्यूमर सेल का पीस को, उसको लेकर के एनवायरनमेंट दिया गया और एनवायरनमेंट के अंदर इसको छोड़ दिया गया ग्रो करने के लिए, मार्क करके. एंड नाउ इफ इट इज ग्रोइंग, देन यू कैन सिंपली से कि ये कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रो कर रहा है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. इट इज नॉट ओबेइंग द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिंसिपल. एंड नाउ यू कैन सिंपली से कि ये बायोप्सी मतलब ये कैंसर हो गया है. ओके, दैट इज बायोप्सी. ये सारे के सारे MRI स्कैन, CT स्कैन एंड रेडियोग्राफी, दीज आर दी इमेजेस, 2D and 3D images, 2-dimensional and 3-dimensional images. But biopsy is something different. Here the
activity of the tissue is study. Activity of this tissue is study. बायोप्सी में क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ टिश्यू को देखा जाता है, टिश्यू एक्टिविटी को पढ़ा जाता है, ठीक है, बायोप्सी. Remember this one. So this is all about your diagnosis process. In the next class we'll be talking about the treatment now. Surgery, chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. और ट्रीटमेंट के बाद कैंसर खत्म अपना. कैंसर के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. ये खत्म हो जाएगा कल के क्लास में. So that's all for today. Just let me know if you have any kind of doubt and if you want me to explain you anything. If you don't have any doubt, then please vote for me in the teacher NPS poll, then we can end the class. If you like my class, click on always. Thank you. If you have any doubt, let me know in the chat section. Thank you everybody. Thank you then. Bye bye.